That was the 10,000th portable water purifier given by Gulf Oil to truck drivers under the Suraksha Bandhan initiative. Good morning, viewers, and welcome to Trans India Real People, Real Emotions. This episode is dedicated to a very unique initiative by Gulf Oil called Suraksha Bandhan. If we were to break up the above two words, it would simply mean protection and relation. And these are the two factors missing in the lives of truck drivers when they are driving on the highways, making sure that you receive your goods. You may be an individual or an industry, but you are largely dependent on truck drivers for everything that you consume. However, unfortunately, no one bothers about what the truck drivers have to go through during their strenuous and tough journey spanning the entire length and breadth of this vast country. Gulf Oil realizes huge gap and started the Suraksha Bandhan campaign 5 years ago with a different initiative every year to reach out to truck drivers and make their lives simpler in whatever way possible. This year their focus has been around the health of the driver, especially helping them overcome the waterborne diseases that they suffer due to poor quality of water that they are forced to consume during their journey. Gulf Oil started distributing portable water purifiers to truck drivers, and on the occasion of Raksha Bandhan this year, they completed the distribution of the 10,000th water purifier at an event in Kalamboli, a major trucking hub of Navi Mumbai. On the same day, Gulf Oil also inaugurated a medical clinic that would be open 5 days a week to diagnose and treat truck drivers. This initiative is in collaboration with Humsafer. And facilitating this entire program at Kalamboli was the Bombay Transport Cooperative Consumer Society Limited, the Federation of Bombay Motor Transport Operators, and Bombay Goods Transport Association. But what is Suraksha Bandhan all about? And what has been their initiatives in the past, including one that got them into the Guinness Book of World Records? We'll hear more from this from the Managing Director and CEO of Gulf Oil, Mr. Ravi Chawla. But after this very short break, you are watching Trans India, Real People, Real Emotions, a Gulf Oil special episode. अरे एक ही लड्डू लाई हो। आप गल्फ का इंजन ऑयल हमेशा अपने साथ क्यों रखते हो? क्योंकि ये मेरे ट्रक के इंजन की सुरक्षा करता है। इस बार ना हम भी आपको राखी पे कुछ देना चाहते हैं। ये किस लिए? जब आप हफ्तों अकेले बाहर रहते हैं तब हम नहीं होते ना आपके साथ। ये हमेशा आपके साथ रहेगा। अब जहाँ जाइएगा फिल्टर वाला पानी ही पीजिएगा। तू रहे सलामत हर पल मन। गल्फ सुपर फ्लीट, वचन सुरक्षा का। Welcome back to Trans India, Real People, Real Emotions, a Gulf Oil special episode. We are at Kalamboli, Navi Mumbai, and with us is the MD and CEO of Gulf Oil, Mr. Ravi Chawla, telling us more about the Suraksha Bandhan initiative. So Ravi, what is Suraksha Bandhan all about? Well, at Gulf, we do a lot of brand promotions. We do a lot of our campaigns. This campaign, I would say, is one of the most unique campaigns for us, because on Raksha Bandhan, which is a day where protection, when the sister ties the Rakhi to the brother, it's all about protection and taking care of the brother taking care of the sister, and nowadays even sisters caring for their brothers. So this occasion of Raksha Bandhan, our marketing team since the last 5 years have come out with this very innovative concept, जो मैं कहूँगा एक unique concept है. And उसमें क्या हो रहा है कि इस दिन हम जो हमारे ट्रक कम्युनिटी जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, as lubricants, as you know, large part gets consumed by the truck community. They are definitely very important for us. और मैं कहूँगा कि Gulf as a brand has always been an emotional brand. जो brand एक connect होता है लोगों के साथ, person to person. तो ये एक इमोशनल कनेक्ट है जिसके बारे में हम इस कैंपेन में प्रोटेक्शन जो एक फीचर है, हमारा प्रोडक्ट है गल्फ सुपर फ्री टर्बो प्लस, जो प्रोटेक्शन के ऊपर हम प्रमोट करते हैं. बट ये प्रोटेक्शन आप प्रोडक्ट के साथ ले लो, उसी को हमने एक प्रोटेक्शन फॉर दी ट्रकर इन मेनी फॉर्म्स
हमने एक लास्ट 5 कैंपेन्स में इसको हमने मैं कहूँगा कि पेश किया है और उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। 5 साल पहले हमने जो ट्रक ब्रदर और उनकी सिस्टर जो घर पे है, उनके थ्रू एक मैसेजिंग और पोस्ट कार्ड के द्वारा एक कैंपेन किया था, जो 10,000 ट्रकों ने अपने बहनों को एक मैसेज भेजा रक्षाबंधन में, और उसका पूरा कैंपेन किया था हमने कई ढाबों में, कई ट्रांसपोर्ट नगर में। सेकेंड ईयर में हमने, क्योंकि कोविड का जो डेफिनेट प्रॉब्लम हो रहा था, हमने सोप स्ट्रिप्स एक राखी में और हेल्थ किट, सेफ्टी मास्क वगैरह ट्रकर भाइयों को पूरे इंडिया में हमने दिया था 10,000 से ज़्यादा ट्रकर को। थर्ड ईयर में जब वैक्सीनेशन का इतना चैलेंज आ रहा था कि लोगों को वैक्सीनेशन की जो अपॉइंटमेंट और करने के लिए इतना प्रॉब्लम्स आ रहे थे, हमने ट्रकर्स के लिए ऑन द स्पॉट 10,000 ट्रकर्स को इमीडिएटली वैक्सीनेशन की जो फैसिलिटी है दी थी, और ये हमारा 3rd सुरक्षा बंधन कैंपेन था। लास्ट ईयर हमने उस हेल्थ के बारे में जो कॉन्सेप्ट था उसको आगे बढ़ाया, और एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक पूरी हेल्थ के माध्यम में उनको कैसे केयर किया जाएगा वो कैंपेन किया था, अगेन 10,000 ट्रकर्स के लिए। और इस साल हमारी टीम ने और एजेंसी ने ये सोचा कि जो पानी का जो समस्या है, जो ट्रकर्स रोड पे रहते हैं, उनको काफ़ी जो ड्रिंकिंग वाटर की जो फैसिलिटी है वो उनमें काफ़ी कंस्ट्रेंट्स रहते हैं, और उसके द्वारा उनको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ की जो इश्यूज आते हैं, तो उसको कैसे हम एक छोटे तरीके से हमारे तरफ से कुछ करें। तो ये इस साल का सुरक्षा बंधन 5 होगा, वो एक हम वाटर प्योरीफायर, पोर्टेबल वाटर प्योरीफायर 10,000 ट्रकर्स को दे रहे हैं, वाटर फैसिलिटीज क्रिएट कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट नगर में, और हम एक सुरक्षा क्लिनिक भी जो लॉन्ग टर्म रहे इसमें इन हेल्थ के बारे में। तो ये 3 कड़ियां हैं, और आज मुझे बहुत खुशी है कि आज इस ट्रांसपोर्ट नगर में हम 10,000 पोर्टेबल वाटर फिल्टर देंगे हमारे ट्रक भाइयों को। और मेरी टीम, आप सब, हमारे चैनल पार्टनर्स, मीडिया पार्टनर्स, एबीपी, बिग एफएम और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस, आप जैसे लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कई एनजीओज हैं, तो साथ साथ हम ये पूरा एक प्रोग्राम कर रहे हैं, और हमें बहुत खुशी है जो हम रिस्पांस भी देख रहे हैं कि इतने लोग आ गए हैं, और उम्मीद है कि ये जो हमने छोटा सा किया है, ये एक और हमारे तरफ से, गल्फ की तरफ से ट्रकर भाइयों के लिए एक जज्बा है जो हम जरूर आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट सीजन में, और ये कंटिन्यूस प्रोग्राम और हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है। Ravi, one of your campaigns even made it to the Guinness Book of World Records. Tell us a little bit more about that. यस, सो हमने मैसेजिंग का जो पहला वाला किया था सुरक्षा बंधन में, उसने हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी रिकॉर्ड कायम किया, क्योंकि इतने मैसेजेस एक कैंपेन में हुए नहीं थे। तो मुझे याद है कि वो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के लोग भी आए थे उसको वेरीफाई करने में। हमने बॉम्बे में ही वो 10,000 दिया था, तो वो एक हमने रिकॉर्ड अचीव किया था फर्स्ट वर्जन में। Ravi, what made you choose portable water purifier for this year's campaign? What is the thought process behind this one? देखिए, हम जो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो डेफिनेटली पूरे कंज्यूम होते हैं ट्रक भाइयों और उनके फ्लीट ओनर्स के साथ। तो हमने उनके साथ चर्चा की थी हमारी टीम ने कि कैसी समस्याएं हैं आपके पास। तो ये वाटर का जो हमने सर्वे किया था कि 25 आउट ऑफ 28 स्टेट्स में ये बिल्कुल प्रॉब्लम है कि ट्रकिंग कम्युनिटी और वाटर कंटामिनेशन की जो चैलेंजेस है, तो ये मुद्दा हमने लिया है। बहुत सारे मुद्दे हैं, बट मैं कहूँगा इस पर हमको काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जो हमने हेल्थ में किया था उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और ये बिल्कुल रियल समस्या है। आज भी मैं आया था, कुछ वाटर शॉर्टेज भी चल रहा है, तो मैं कहूँगा कि ये समस्या है, और इनके पास जब ये इतना काम कर रहे हैं, डिफरेंट रूट्स में है, ड्रिंकिंग वाटर इज डेफिनेटली एक चैलेंज होता है, और उसके कारण हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। तो ये हमने इस मुद्दे को लिया है, और क्योंकि हमको फीडबैक भी आया कि अच्छा मुद्दा है और इम्पोर्टेंट मुद्दा है, तो हमने इस पे जीरो करके ये काम कर रहे हैं। और जैसे मैंने बताया आपको कि ये एक कड़ी है और आगे बढ़ेगी। Ravi, any targets in mind for this initiative? देखिए, अभी हमने 10,000 ट्रकर्स को हम दे रहे हैं पोर्टेबल वाटर फिल्टर, और जो उनको यूज में आएगा। हम 10 ट्रांसपोर्ट नगर्स में एक वाटर फैसिलिटी भी परमानेंट वाटर प्योरीफायर का कर रहे हैं, और हमने यहाँ कलम्बोली में अब एक सुरक्षा क्लिनिक हमारे एनजीओ है हम सफर के साथ, उनके साथ शुरू किया है। तो ये मैं कहूँगा कि ये डेफिनेटली अभी प्लान है, और उम्मीद है कि हम इसको आगे भी बढ़ा सकें। Tell us a bit about the clinic, Ravi. जहाँ तक मेरे को जानकारी है, ये क्लिनिक परमानेंट क्लिनिक है। यहाँ डॉक्टर रहेगा, फिजिशियन डॉक्टर 8 घंटे एक दिन में, और जो भी ट्रकर भाई आएंगे उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स वगैरह की एडवाइस दी जाएगी, और यहाँ फैसिलिटीज़ हैं कि वहाँ उनको कैसे कुछ मेडिसिन वगैरह भी दिया जाए। तो मेरी ये जानकारी है कि ये होगा, और मेरे को जो टीम ने बताया कि ये पूरा एक ऑलराउंड सर्विस रहेगा, और डेफिनेटली हम सफ़र के साथ उनको भी कुछ इनिशिएटिव्स हैं, तो साथ में वो जुड़ेंगे। You have been connected with this industry for a long time.
Over the years, trucks have improved in terms of driver comfort and oils are also of higher quality. However, the plight of drivers on highways remains unchanged. What are your thoughts on this? देखिए, इसमें एक मूवमेंट है। जैसे हम कहते हैं कि हर एक चीज़ कंपनियां भी ट्राई कर रही हैं और जो कंज्यूमर्स हैं वो भी ट्राई करेंगे, जो ओनर्स हैं। तो ये एक सोशल मूवमेंट है। मेरे हिसाब से इसको मोमेंटम देना चाहिए हमको, सबको साथ को मिलकर कर रहे हैं। कुछ कंपनियां कुछ कर रही हैं, बट ड्राइविंग कंडीशंस, कैबिन सेफ्टी, कैबिन ड्राइविंग कंडीशंस, OEMs आर डेफिनेटली ट्राइंग टू इम्प्रूव इन द सेटअप. We are looking at जो conditions हैं on the way, facilities also should be stepped up by all the people building roads. I think ये movement को मेरे हिसाब से और momentum मिलेगा और हम भी कोशिश करेंगे। एंड अगर सब साथ में मिलेंगे तो मैं कहूँगा ड्राइविंग कंडीशन बहुत इंप्रूव हो सकता है। हम देख रहे हैं हमारे कंट्री में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो इंस्पायरिंग है, उन्होंने काफ़ी कुछ सोशल मूवमेंट्स करके ये एक लहर हमने देखा है और कई एरिया में आपको भी पता है कि हुआ है। तो ये मैं कहूँगा ट्रांसपोर्ट, इवन मिनिस्ट्री, OEMs, transport associations, all of us companies who are part of it, इसको एक मूवमेंट बनाना चाहिए जो हम भी कोशिश करेंगे कि लोगों से बात करके इसको आगे बढ़ाएं। Ravi, do you think AC cabins in trucks is a step in this direction? डेफिनेटली है, क्योंकि हमारे जो क्लाइमेट कंडीशंस यहाँ काफ़ी हार्श होते हैं समर में, अनलाइक अदर कंट्रीज जहाँ क्लाइमेट थोड़ा टेम्परेट रहता है। तो ऑल दीज मेजर्स डेफिनेटली विल मेक अ डिफरेंस बिकॉज वी एज कंज्यूमर्स, हम जब गाड़ी में बैठते हैं तो इफ हॉट एंड ह्यूमिड द AC helps us. So I think it is definitely a step in the right direction. Even other conditions like number of hours they can drive, those kind of things, monitoring, and people are doing it very consciously. Some of the transport companies also have started doing it. I think more power to that. And definitely for Gulf, it's an opportunity for us to do more. Finally, Ravi, what would be the roadmap for Suraksha Bandhan from here on? So we have been on the health theme. I would say the last 4 years it was also due to COVID. We would like to continue doing things which will have an impact. The team will again go out and reach out and find out what are the other pain points जो है, जो problems है. पर मैं कहूँगा कि हमने health जो लिया है एक important है. उम्मीद है कि उसमें भी हम कंटिन्यू करें और नए आइडियाज भी लाएं। तो नेक्स्ट ईयर रक्षा बंधन विल बी देयर। लेट्स सेलिब्रेट दिस ईयर रक्षा बंधन, बट वी विल बी रेडी फॉर वन मोर कैंपेन एंड वी विल टेक फीडबैक। बट आई वुड से दैट conceptually we should continue with also health because we have taken that on as an important area for us. Well, friends, that was the MD and CEO of Gulf Oil, Mr. Ravi Chawla, making it amply clear that health of truck drivers is paramount for the company and they will continue focusing on improving the same through various initiatives under the Suraksha Bandhan campaign. Coming up after this very short break, glimpses of the event at Kalamboli and views of members of the transport industry as well as Gulf Oil officials. You are watching Trans India, Real People, Real Emotions, a Gulf Oil special episode. अरे एक ही लड्डू लाई हो? आप गल्फ का इंजन ऑयल हमेशा अपने साथ क्यों रखते हो? क्योंकि ये मेरे ट्रक के इंजन की सुरक्षा करता है। इस बार ना हम भी आपको राखी पे कुछ देना चाहते हैं। ये किस लिए? जब आप हफ्तों अकेले बाहर रहते हैं तब हम नहीं होते ना आपके साथ। ये हमेशा आपके साथ रहेगा। अब जहाँ जाइएगा फिल्टर वाला पानी ही पीजिएगा। तू रहे सलामत हर पल मन। गल्फ सुपरफ्लीट, वचन सुरक्षा का। Welcome back to Trans India, Real People, Real Emotions, a Gulf Oil special episode. The health of truck drivers has always been an area of concern for the transport industry as well as the allied industries. The delivery of any consignment, amongst other factors, also depends on the health and well-being of the drivers. This includes many parameters, including physical and mental. In recent times, we have heard of the death of many truck drivers during their journey, primarily due to heart attack. But any ailment does not happen overnight. It is a build-up of so many things. In case of truck drivers, the biggest enemy is their working condition, which leads to a lot of mental stress and fatigue. And this can be fatal, as we have seen in many cases. For years now, transport companies, associations, automobile manufacturers and other allied companies have been organizing health checkup camps for the drivers. They not only diagnose the drivers thoroughly for any ailments,
but also advise them on a better lifestyle besides, of course, prescribing medicines and even providing them for free. As we heard from Ravi, the Suraksha Bandhan campaign by Gulf Oil has entered into its fifth year, and the focus this year has been around water and health. At the function held at Kalamboli, Navi Mumbai, Gulf Oil distributed portable water filters to truck drivers, and the 10,000 water purifier was handed over by Ravi himself. Later, Ravi, along with other officials from Gulf Oil and the transport fraternity, inaugurated a permanent drinking water facility. In fact, confirming the purity of the water being provided at the facility, Ravi and President of Federation of Bombay Motor Transport Operators, Mr. Daljit Singh Bal, had a sip, or rather a glass of the same. The other highlight of the day was the inauguration of the Gulf Superfleet Suraksha Clinic, started in collaboration with Humsafer, which is headed by Jihan Kotwal. Coming up after this very short break, more on the inauguration and thoughts of the officials. You are watching Trans India, Real People, Real Emotions, a Gulf Oil special episode. अरे एक ही लड्डू लाई हो? आप गल्फ का इंजन ऑयल हमेशा अपने साथ क्यों रखते हो? क्योंकि ये मेरे ट्रक के इंजन की सुरक्षा करता है। इस बार ना हम भी आपको राखी पे कुछ देना चाहते हैं। ये किस लिए? जब आप हफ्तों अकेले बाहर रहते हैं तब हम नहीं होते ना आपके साथ। ये हमेशा आपके साथ रहेगा। अब जहाँ जाइएगा फिल्टर वाला पानी ही पीजिएगा। तू रहे सलामत हर पल मन। गल्फ सुपरफ्लीट, वचन सुरक्षा का। Welcome back to Trans India, Real People, Real Emotions, a Gulf Oil special episode. As an extension of the Suraksha Bandhan campaign, Gulf Oil started a permanent clinic at Kalamboli. The same was inaugurated by Ravi Chawla along with his team and officials of transport associations. The clinic has been set up in collaboration with Humsafer, which would not only provide complete medical health check for the drivers, but also give them consultation on safer driving as well as money management tips. There is also a provision to provide credit in case of emergencies. This is what Amit Geji, head of marketing at Gulf Oil, had to say about this initiative. So the thought started with, I think by all, everyone knows about Gulf Superfleet Suraksha Bandhan, which is in its fifth year now, and which revolves around the protection of truckers, because the product takes care of the protection of the truck engine. So the thought was, how can we extend the brand to take care of the trucker, to protect the trucker. So, the health aspect came out as the biggest worry for us, because nobody really, at least no big companies or no big, organizations rally behind the truckers' health and take care of them. So we thought there was a good space for us to help one of our most important consumer segments. And that's how this thought started. And when it comes to physical health, in the last 3 years, we've done a lot for the truckers, and it has been appreciated a lot. And thanks to our trucker community for that. So we've done vaccination programs. Before that, we've given them sanitizer and mask and soap strips when vaccine wasn't available. And when a vaccine became available, we were the first to immediately come to the transport nagars and give them at their place of work free of cost. Right. In the third year, we've given them a health insurance package as well. So the thought here was to extend it, and this year, while we are doing the water purifier thing, but we also said let's add one more layer of protection of the health by setting up a physical dispensary in the transport nagar, where there will be a doctor on call, as in doctor available throughout the year. So that's taken care of by Gulf. So whenever truckers have any physical problems, any health problems, they can come to the clinic and avail of these services. That was the thought, that protecting the truckers' health all throughout. As mentioned earlier, the Gulf Superfleet Suraksha Clinic is run in collaboration with Humsafer. Talking to us on this initiative is the founder of Humsafer, Jihan Kotwal, and this is what he had to say. So Humsafer is doing it in two ways, which is online as well as offline. The online support is we're doing a digital road safety as well as campaign for truck drivers around how to reduce road accidents.
And on ground, we have doctor facilities, we have loan facilities, as well as we have Raksha. So from that, they can get any sort of medical or any sort of government initiatives that they are not aware of. Eye checkup, health checkup, all of this is free of cost for the drivers on ground. And this is the first center that we're putting up. After this, we plan to launch another 15 more centers. What facilities will be available here? So a driver can come in, he can get his doctor checked as a normal OPD. He can get medicines if he is in need of anything, and that too free of cost. He can get eye checkup done, as well as if he is in a financial trouble, he can get facilities to understand how can he get a loan at the cheapest price. And fourth and final is around if there are any schemes that the government has given free of cost around his family cover or around his ration, etc. All those through the technology platform Haksar, we can give that to him. The event was also attended by members of Transport Association, and they also shared their thoughts on the Suraksha Bandhan initiative by Gulf Oil. गल्फ सुपर फ्लीट सीजन 5 सुरक्षा बंधन वचन साफ पानी का मैं सबसे पहले तो गल्फ की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और साथ ही साथ शुभकामनाएं देता हूं। और जो गल्फ क्लिनिक जो इन्होंने आज हमारे कलम्बोली नवी मुंबई में आज इसका इनॉग्रेशन होने जा रहा है, बहुत ही ये नीड ऑफ द आवर था। अगर आप देखेंगे ये कलम्बोली एरिया में ऐसी कोई भी क्लिनिक आज की तारीख में उपलब्ध नहीं है, और गल्फ की ये सोच को मैं अप्रिशिएट करता हूं। और जो आज इन्होंने क्लिनिक का आयोजन कर रहे हैं, इधर अपना इनॉग्रेशन हो रहा है कलम्बोली में, इसका ज्यादा से ज्यादा हमारे ड्राइवर भाई, हमारे क्रू मेंबर्स इसका फायदा लेंगे। और जो हमारा रोल आता है एसोसिएशन का, हम अवेयरनेस करेंगे जिससे हमारे मेंबर्स, हमारे ट्रकर्स जो हमारे साथ में जुड़े हैं, इसका ज्यादा से ज्यादा इसका हम फायदा लेंगे और हमारे ड्राइवरों को इसका लाभ होगा। Drivers are human beings that need to be treated with dignity and respect. Companies like Gulf Oil are the rare few that are putting their money where their mouth is and actually creating good facilities that can assist the driver in his journey. We hope to see many more such centers across India, making sure that truck drivers are in the best of health during their journey. We will be back again next week with a very special interaction. You have been watching Trans India, Real People, Real Emotions, a Gulf Oil special episode. Until next week, stay safe, stay healthy. Jai Hind.